तो अभी हम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं. It's 6 a.m. right now and we are flying to Delhi. Hey guys, I'm Kathy. And I'm Anuj. Welcome to a new travel series of Turkey. This is our first video from the Turkey series, so please do stay connected. और भी बहुत सारे ऐसे videos आने वाले हैं. And also, if you're new to the channel, please do subscribe to our YouTube channel so that you will get notified when we put new video. We had morning 6 a.m. flight from Mumbai. From Mumbai, we came to Delhi Domestic Airport. T1. T1. Yes, and from there we got a shuttle bus. Their shuttle bus service is running. It takes 25 rupees charge, but हमारे लिए free था because we had connecting flight. So now we are on T3, Terminal T3, Delhi Airport. Our flight now is at 2 p.m. So just now we'll be roaming here. We'll just see the airport. We had something munching just now at the food court up there. And now seeing what to do. Now we are boarding. So while flying to Istanbul, हमें लंच में मिला है एक ये सैंडविच और पेपर बोट का जूस. हेलो, अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट. अभी इंडिया के तो बजे हैं 9:18, पर इस्तांबुल में अभी कितने बजे हैं? 6:30 हुए हैं. तो इतना टाइम डिफरेंस है. इंडिया में अभी 9:18 है और यहाँ पे 6:30 है. काफ़ी अंधेरा हो चुका होगा वहाँ पे. तो यहाँ पे इट्स टू सनी. यहाँ पे आते से ही 10 मिनट के अंदर हमारा इमिग्रेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया. एंड नाउ हम लगेज लेने के लिए जा रहे हैं. हाँ, स्टाफ हियर इज़ टू फ्रेंडली. बहुत अच्छे से उन्होंने बात की हमसे. अच्छे हैं यहाँ पे, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, हंस के बात करते हैं, स्माइल करते हैं. ये चीज़ मैंने इंडिया में नहीं देखी. इंडिया में लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं एकदम चेहरे पे. But they smile here, talk to you very nicely. How much do I get for 200 USD? Turkish lira. 200 USD. I will show you. This option just in here. Outside, and also taking commission. How can I get taxi? This option outside. Taxi. 350. Okay. तो एयरपोर्ट पे 2-3 मनी एक्सचेंज काउंटर पे इंक्वायरी करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेट हमें ठीक लगा, तो हम यहाँ से मनी एक्सचेंज कर रहे हैं अभी.
अभी मैंने करेंसी एक्सचेंज कराया। इंडियन रुपीज़ तो इन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, यूएसडी एक्सेप्ट कर रहे थे। तो यूएसडी में मैं पहले 200 यूएसडी करा रहा था। तो 200 यूएसडी अगर 200 यूएसडी में ठीक ठाक रेट मिल रहा था। इन लोग का स्कीम है, अगर मैं 500 या 1000 यूएसडी एक्सचेंज कराता हूँ तो 10% और डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने फिर 500 यूएसडी एक्सचेंज कराया है यहाँ पे। और मैं देखता हूँ अगर कहाँ पे इंडियन रुपीज़ अगर एक्सचेंज होता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। Yes. How many days you were staying here? 30? 1 to full day. I have this Vodafone. It's 185 lira. Okay. It will give you free unlimited WhatsApp, only text messaging and voice calling, no video calling. Okay. And you will have another 1,500 minutes. These minutes can be used both for local calls or for the duration you spend on internet. For example, you surf for 30 minutes WhatsApp, it will be deducted from here. Or 25 minutes Instagram will be deducted from here. Okay? So if you don't make any local calls, this is up to 30 GB, equivalency of up to 30 gigabyte of data. It's 185 euros, cheapest plan in the airport right now. Turk Telecom is offering good plan, so we'll be buying SIM card from here. टर्की में मेन तीन कैरियर्स हैं। ये देखो, टर्क टेलीकॉम, वोडाफोन और टर्कसेल। टर्कसेल का ऑफिस पता नहीं आज क्यों बंद है। वोडाफोन और टर्क टेलीकॉम, मुझे वोडाफोन में 185 लीरा में अराउंड 1500 मिनट्स सिर्फ कॉलिंग मिल रहे थे। कॉलिंग प्लस डेटा, यानी मैं डेटा यूज़ करता हूँ तो वो भी मिनट्स में काउंट होता है। उसका व्हाट्सअप एकदम फ्री है। और एक है मुझे इसमें टर्कसेल में 200 लीरा में 1000 लोकल कॉल्स प्लस 15 GB डेटा, ये दोनों मिल रहे थे। सो मैंने टर्कसेल लिया। बाकी दोनों के प्लान्स अच्छे थे। तो अभी देखते हैं इसके नेटवर्क कैसे रहते हैं और नेट का स्पीड कैसा मिलता है। नेटवर्क बस टिकट और इस्तांबुल कार्ड just works as a Istanbul card works on all metros, bus, ferry services. So if you get one, that's very useful. I paid 42 lira. In 42 lira, I got 36 lira of usage. This is the this is what card looks like. सिटी में कोई भी एरिया में जाने के लिए आपको ये बसेस यहाँ से मिल जाएगी, विच इज़ चीप एंड बेस्ट। सो फाइनली हम सुल्तान अहमद एरिया में पहुंच गए हैं। आज की हमारी होटल भी इसी एरिया में है, सो वी आर गोइंग देयर।
सुल्तान अहमद एरिया लेट नाइट तक लाइवली है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। एज़ ब्लू मॉस्क, हाया सोफिया यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो इट्स कम्प्लीटली सेफ़। आप यहाँ पे लेट नाइट तक भी घूम सकते हैं। So, this was our first day. See you in next. Till then, do subscribe to our YouTube channel, do like our Facebook page, and follow us on Instagram.